Hello, good evening everyone. Warm welcome to your own platform that is Exam Norm. So today we are going to start with the third chapter of finance. We have already done with RBI as well as inflation in the paid course, and we have taken around 12 to 13 sessions of RBI chapter, and then we have discussed live the descriptive answer writing for RBI. Then we started with inflation. We have even completed with inflation, and even we have done with the inflation descriptive session. So today I'm opening the stage for the next chapter, and the next chapter we have today is monetary policy. Whenever we talk about monetary policy, we must understand what all areas we need to cover and what is the importance of this particular topic. So first of all, if I start my discussion, for all those candidates who are watching me for the very first time, don't worry, guys. I will be completing this entire chapter of monetary policy on this YouTube channel. So, if you want to complete the topic that is monetary policy from basic to advanced, everything will be delivered in on this particular platform itself. So you can join with me on regular basis, at least I would say for next 4-5 days, so that we can cover the entire monetary policy chapter. Even I'll try my level best to conduct the descriptive class as well on monetary policy on the same platform. So don't worry about that as well. ठीक है जी? So if you guys are ready and you want me to start with the discussion, give me yes sir if everything is fine, so that we can start the discussion without any further delay. And secondly, I'll quickly give you the overview what all areas or what all topics we are going to cover in this particular chapter. And the importance of this chapter is very obvious. It is being asked in almost all the exams. It is being asked in almost all the prior exams which have been conducted for आरबीआई एज वेल एज अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम. चाहे वो क्वेश्चन अब पूछा जाए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में या फिर क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए यहाँ पे, या फिर जिसके बारे में, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना देखने को मिले. तो यही मैंने सोचा कि ठीक है यार, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्यों ना इस टॉपिक को सबके लिए ओपन कर देते हैं. एवरीबडी शुड लर्न, एवरीबडी शुड नो दैट हाउ डिटेल्ड फॉर्मेट वी कवर द फाइनेंस, ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आपको चीजें समझ आए. ठीक है जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन. सबसे पहली चीज व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर chapter. So as I said, it's class 1. I will be taking 4 to 5 classes. First of all, I'll discuss with you what is monetary policy. Then I'll discuss with you the importance of monetary policy. After that, I will be discussing with you the evolution of monetary policy, that how monetary policy has evolved over the period of time. 1970s 80s से लेकर 2016 तक जैसे evolve हुआ, we will be talking about that. After that, we'll discuss the monetary policy stance. We'll discuss the different types of monetary policy. After that, we'll discuss the different tools of monetary policy, where we'll discuss conventional, unconventional, as well as qualitative tools, or I would say conventional or quantitative tools of monetary policy. इतना ही नहीं, जैसे हम क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज वेल. अगर किसी के दिमाग में डाउट है कि सर आज तक ए एंड बी सी समझ नहीं आया, व्हाट इज जस्ट इन नेट बैंक क्रेडिट, सर आज तक समझ नहीं आया दैट हाउ नेट बैंक क्रेडिट is basically calculated, how A and BC is basically calculated, how the percentage of CRR is obtained, that is net demand and time liability. अगर किसी को किसी भी टर्म से रिलेटेड डाउट है, तो आज या आने वाले दिनों में इस सेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो क्या, अगर आपको ये भी नहीं पता अभी तक कि हाउ CRR and SLR is calculated, how CRR and SLR is maintained, how this maintenance is done, what is the role of currency chest in maintaining the CRR and SLR values for the bank, everything will be discussed in this particular session itself, in this particular chapter itself. ठीक है जी, समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ ये पॉइंट. तो अगर आप मुझे अलाउ करें, then I would definitely start with the discussion. But before I start, I have a simple question for everybody who all are listening to me.
If I ask you, what do you understand by the word monetary policy, then what will be your answer? If I ask you, what is the meaning of the term monetary policy, what will be your answer? Can you give me the answer for this particular question? Can you give me the answer for this particular question? Anybody, if you can, अगर आप एक ट्राई करना चाहें और मुझे बताना चाहें कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. Anyone want to give a try? It's fine. Otherwise, I will be giving you the answers. YouTube पर all subjects की पूरी classes होंगी. बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला. This is just a demo class and I will be completing the entire monetary policy topic on YouTube. इतना मैंने बोला. मैं पूरे का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट करूंगा, ये मैंने बोला. सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, ऐसा मैंने नहीं बोला. प्लीज डोंट मिसगाइड एनीबडी एंड डोंट गेट मिसगाइडेड एज वेल. ठीक है, काम की बात करते हैं. नो मोर डिस्कशन हेयर एंड देयर, उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट ये है, व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स अ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, what do you understand by the word monetary policy. देखो मुझे ज्यादा समझ नहीं आता monetary policy term, but I always try to understand as per the statement, as per the words which are mentioned. देखना जरा मेरे पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका कैसा है. I will always see that भैया आपने मुझसे क्या पूछा. You asked me monetary policy. You asked me monetary पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है सर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है व्हेन वी यूज दिस वर्ड मॉनेटरी, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट सर, इट टॉक्स अबाउट मनी सप्लाई. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉलिसी, सो पॉलिसी बेसिकली टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट कंट्रोल. पॉलिसी का मतलब ही कैसा, जब कोई पॉलिसी बनाई जाए, इट्स बेसिकली फॉर मैनेजमेंट, फॉर कंट्रोल, फॉर डेवलपमेंट, फॉर अपलिफ्टमेंट. और मॉनेटरी का मतलब मोटा मोटा क्या है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट मतलब मॉनेटरी का मनी सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो वो क्या है, दैट इज मनी सप्लाई, है ना. अब अगर मुझसे कोई पूछे दैट सर हाउ यू डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, तो मेरा आंसर क्या होगा, भैया सिंपल सी बात है, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना. सो द मेथड यूज्ड बाय आरबीआई, द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय आरबीआई in order to control the money supply in the market. And what is the agenda behind controlling the money supply in the market? So the agenda behind controlling the money supply in the market is control the inflation, or I would say to maintain price stability. Because we all know that आरबीआई गवर्नमेंट इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट दे हैव टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. अलॉन्ग विथ प्राइस स्टेबिलिटी दे वांट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. They want economic growth as well. सर ये दोनों इंटरलिंक्ड कैसे हैं, ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज कैसे हैं, इसका मैं अगर आपको बताऊं, या फिर अगर आपने कहीं न्यूज में पढ़ा हो, इट हैज बीन ऑलवेज रिटन दैट इंडिया इज इन अ गोल्डी लॉक सिचुएशन. इंडिया इज इन अ गोल्डी लॉक सिचुएशन. वो एक्चुअली वो गोल्डी लॉक सिचुएशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. Whenever money supply in the market increases, it's quite obvious द डिमांड विल इंक्रीज. मुझे पता है कि डिमांड सिर्फ मनी सप्लाई पे डिपेंड नहीं करती सर, डिमांड डिपेंड करती है आपकी नीड पे, डिमांड डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट पे, डिमांड डिपेंड करती है आपके डिजायर पे. तो आपके पास नीड है, रिक्वायरमेंट है या डिजायर है, उसके साथ साथ सेकंड जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एडिक्वेट मनी सप्लाई, दैट डू यू हैव द एडिक्वेट मनी सप्लाई और नॉट. और तीसरा है आर यू विलिंग टू मेक द एक्सपेंडिचर और नॉट, विलिंग टू स्पेंड. अगर आपके पास ये तीनों फैक्टर्स कंप्लीट होंगे, इफ ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली, देन ओनली वी से दैट डिमांड इज जनरेटेड. फॉर एग्जांपल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड आई सी अ कार पासिंग बाय नियर मी, आई से ओ गॉड आई विश आई कुड ओ दिस कार. सो इट्स बेसिकली माई डिजायर, लेकिन डिजायर डिमांड नहीं है. देन आई विल क्विकली गूगल द प्राइस ऑफ द कार, then I'll check that whether my bank account is having that much funds or not. Surprisingly, yes, my bank account was adequate enough to purchase a car. But the moment I decided to purchase a car, I talked to myself and I came up with this statement here. It's going to be difficult because I have made this saving for some other purpose, not for purchasing a car. तो चाहे मेरे पास need थी, चाहे मेरे पास एडिक्वेट मनी सप्लाई थी, बट इफ आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड, अनडाउटेडली आई विल नॉट क्रिएट द डिमांड, आई विल नॉट बी कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट. बट
यहां पे एक पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है, वो क्या कि सर मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड नहीं करती, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एंड आई विल गिव यू द लॉजिक एज वेल दैट has the highest money supply factor has the highest control over the demand. For example, आज किसी को लॉटरी लगी, the moment you won a lottery, tomorrow itself, the very next day itself, your needs, your requirements, your desires will increase. Your willingness to make the expenditure will increase क्योंकि आपकी जेब में पैसा आ गया. तो मैं ये कह रहा हूं मनी सप्लाई के आने से या मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, हम सब जानते हैं. अब डिमांड बढ़ी तो डिमांड के बढ़ने से क्या होगा सर? डिमांड के बढ़ने से सप्लाई तो साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू इंक्रीज द सप्लाई. आई एम नॉट सेइंग सप्लाई कभी इंक्रीज होगी नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट विल टेक सम टाइम टू इंक्रीज दी सप्लाई. तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो मनी सप्लाई से इंस्टेंटली डिमांड इंक्रीज होगी, और इंस्टेंट डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा सर? इंस्टेंट डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस राइज करेंगे, और प्राइस राइज होने की वजह से मार्केट में क्या आएगी? इन्फ्लेशन. ठीक है, मार्केट में क्या आएगी? इन्फ्लेशन. अब मार्केट में इन्फ्लेशन आई, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ सर? इसका रिजल्ट ये है, व्हेनेवर द डिमांड इन द मार्केट इंक्रीजेस इट विल इंक्रीज प्रेशर ऑन द प्रोडक्शन हाउसेस. तो जितने भी हमारे प्रोडक्शन हाउसेस है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल फील द हीट कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेट्स प्रोवाइड देम विद द गुड्स. सो दे विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, and in order to increase the production they will be hiring more labor, so the employment opportunities in the country will increase. If the employment in the country is increasing, income of the public increases. Income of the public increases, है ना? अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो सर प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से रिजल्ट क्या होगा सर? प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का मतलब है आपकी कंट्री की ओवरऑल जीडीपी क्या हो गई? बढ़ गई. आपकी कंट्री की ओवरऑल जीडीपी क्या हो गई? बढ़ गई. तो अब ध्यान से सुनना, वेन एवर एनीबडी आस्क यू दैट व्हाट इज प्रेफरेबल फॉर एन इकोनॉमी, वी ऑलवेज नो दैट, ये पढ़ा हमने बहुत बार है लेकिन समझा शायद बहुत कम है, दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाट इज प्रेफरेबल सर? वी ऑलवेज प्रेफर कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. अब मुझसे कोई पूछे what is the meaning of controlled inflation? So controlled inflation basically means कि आज जो प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10 रुपए है, अगर उसका प्राइस बढ़कर 12 रुपीज हो जाए तो मार्केट में हाहाकार मच जाएगी, महंगाई आ गई, अच्छे दिन कहां गए, क्या करें, कैसे जिए, कैसे मरे, ये सारी बातें. लेकिन दूसरी तरफ अगर इस इन्फ्लेशन इंपैक्ट की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो अगर आपकी इनकम पहले 10,000 थी, तो अगर वो 10,000 की इनकम बढ़कर 12,000 हो गई तो हम क्या कहेंगे सर? इट इज स्टिल मैनेजेबल. आई होप द इन्फ्लेशन इज मैनेजेबल. क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं पहले 10 में खरीद रहा था, मेरी सैलरी 10,000 थी, अब वही प्रोडक्ट अगर मैं 12 में खरीद रहा हूं, मेरी सैलरी 12,000 है, आई विल अग्री टू इट. So this is a situation which we call it as controlled inflation, where average increase in price of goods and services is in same ratio as income of the country increases. Income of the country increases. I'm not saying income of individual, क्योंकि हर किसी की income एक जैसे तो बढ़ेगी नहीं. I'm just talking about the overall income of the country. अगर overall income of the country is increasing by the same percentage, then it's quite obvious we call it as controlled inflation. अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. Whenever there is a situation of inflation in the economy, we have increase in GDP. That means GDP growth is high. अगर आपको अपनी जीडीपी को और ज्यादा बढ़ाना, इफ यू वांट टू इंक्रीज द जीडीपी मोर, व्हाट विल यू ट्राई टू डू? सो यू विल ट्राई टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, यू विल ट्राई टू इंक्रीज द डिमांड. This will lead to increase in inflation. This will lead to increase in GDP, and this may result in increase in income. अगर हम इंडिया की बात करें तो पुराने कुछ महीनों में हमने देखा था कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है that was low, that was around 2%, और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी, that was doing very well, it was around 6 to 7%. तो अब अगर आप मार्केट में मनी सप्लाई और बढ़ाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उससे क्या होगा? आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी. लेकिन इन्फ्लेशन अगर ऑलरेडी कंट्रोल रेंज, इंडिया में क्या है सर? द कंट्रोल रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज 4% प्लस माइनस 2%. इट इज 4% प्लस माइनस 2%, जिसका मतलब है 2 to 6%.
तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच कुछ भी होगी तो विल से इट्स ओके। तो और दूसरी तरफ अगर आपकी इन्फ्लेशन लो है, दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ हाई है, एंड स्टिल यू हैव दैट विंडो to increase more money supply, which will result in more demand, which will result in more growth, which will result in more inflation, and that too which is acceptable, that too which is feasible. This situation is known as Goldilocks situation, जिसमें इंडिया था। दिस सिचुएशन इज नोन एज गोल्डीलॉक्स सिचुएशन, जिसमें इंडिया था कि सर आपकी इन्फ्लेशन कम है, जीडीपी ऑलरेडी ग्रोथ ऑलरेडी हाई है, इफ यू फर्दर इंक्रीज द मनी सप्लाई इट विल फर्दर पुश योर इन्फ्लेशन, इट विल फर्दर पुश योर जीडीपी ग्रोथ, एंड बोथ विल बी जस्टिफाइड, बोथ विल बी एक्सेप्टेड. So for every economy, what we choose? Sir, if for every economy, we choose controlled inflation. And if the inflation is not in control, then RBI government, they will come in the picture. अब क्वेश्चन ये है कि सर आरबीआई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट नहीं है, उसके साथ साथ आरबीआई ये भी चाहता है कि मार्केट में जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमी ग्रोथ भी क्या हो, एप्रोप्रिएट हो. मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सर अगर इफ मनी सप्लाई, if inflation rates are already high in the market, अगर मार्केट में inflation rates already high है and GDP growth estimates or GDP growth is pretty low, so this situation will be a tough situation for RBI. Reason behind, sir, inflation already high है और GDP growth कम है. अब RBI अगर inflation को control करेगा, अगर RBI inflation को control करना चाहता है तो RBI will do what? Sir, RBI will decrease the money supply in the market. और अगर आरबीआई ने मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज किया, दिस विल फर्दर डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड दिस विल फर्दर पुल डाउन द जीडीपी ग्रोथ. दिस विल फर्दर पुल डाउन द जीडीपी ग्रोथ. इसीलिए कहते हैं कि सर जो इन्फ्लेशन है या मॉनेटरी पॉलिसी है, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू स्टेबलाइज द प्राइस along with economic growth. Monetary policy has to stabilize the price along with growth. तो अगर प्राइस ज्यादा है, ग्रोथ कम है, तो उस समय में उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड बी डन इन अ वेरी फिजिबल मैनर कि भैया आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो और उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है आपकी इकोनॉमी की, दैट शुड ऑल्सो बी वेल मेंटेन्ड. सो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, सर द मेन agenda of RBI through monetary policy is to manage the price stability or to maintain the price stability in the economy. Along with price stability, it is the responsibility of RBI. Along with price stability, it is the responsibility of RBI to manage द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. कि इतना भी ना हो कि आपने मार्केट में मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में इतनी कम कर दी कि ग्रोथ रेट कम हो गए, और इतना भी ना हो कि आपने मार्केट में मनी सप्लाई को कम ही नहीं किया, ग्रोथ भले हो ना हो, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे कंट्रोल कर पाना, उसे होल्ड कर पाना इज रियली वेरी टफ फॉर द आरबीआई. सो नेक्स्ट टाइम इफ समबडी आस्क मी व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मेरा आंसर बड़ा सिंपल होगा, और मेरा आंसर क्या होगा? सर, मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली द पॉलिसी which is framed by RBI with the help of which RBI control the money supply in the market. RBI control the money supply in the market so that RBI can maintain price stability along with required and desirable economic growth. Price stability along with required and desirable economic growth. Now the question is, so what do you understand by the word money supply? The moment I use a word money supply, इसके बहुत सारे different meanings हैं, इसके बहुत सारे different meanings हैं whenever we talk about the meanings with respect to the core economics. लेकिन मैं core economics में नहीं जा रहा, मैं बस आपको money supply का मतलब ये बता रहा हूँ. What is money supply? So money supply is basically currency in system. Currency in the system. In the system means I'm talking about currency with the public. I'm talking about currency with the financial institutes other than RBI. Financial institutes other than RBI. ठीक है जी. अब
जब भी कभी हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, वी हैव टू टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम. व्हाट इज वन इज क्वांटिटेटिव money supply and the other one we have is qualitative money supply. Now the question over here is, sir, what is the difference between the two? Quantitative का मतलब है I'm talking about the quantity of money supply, that means in circulation or currency in system. कि भाई अगर करेंसी आज सिस्टम में 50 करोड़ है, कल 60 करोड़ हो गई, तो इसका मतलब क्वांटिटी चेंज हो गई. लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, सर क्वालिटी का मतलब है चेंज इन चेंज इन चेंज इन flow of change in flow of currency from one sector to another, from one sector to another. ये जब आप करेंसी का फ्लो चेंज करते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दैट इज व्हाट यू आर चेंजिंग द मनी सप्लाई, बट दैट इज नॉट चेंजिंग द ओवरऑल क्वांटिटी, रादर यू आर जस्ट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ मनी सप्लाई, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज क्वालिटेटिव मनी सप्लाई. इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग अहेड. Is it clear? Give me a thumbs up, give me yes sir, so that I can move ahead. If it is clear till this point, give me yes sir, thumbs up, so that I can move ahead. Quickly everybody. I hope I'm audible. सुन पा रहे हो मुझे? Can I have a reply please? If you haven't hit the like button, I would request you quickly hit the like button. If you haven't shared the session, do share it with your friends. If it is clear, give me yes sir, don't sit like this. Do reply quickly if it is clear till this point. Everybody quickly. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है कि सर जब भी कभी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाती है, व्हेन एवर द मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली डिस्कस्ड, तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने से भी पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. भैया आज अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस अपॉन. Second is governance. That's who is going to be the decision making authority, who is going to take the final decision with respect to monetary policy. And third, we have the operational procedures, that how the monetary policy decisions are going to be processed, are going to be implemented in the country. Are going to be processed, are going to be implemented in the country. ठीक है, तो ये 3 stages हैं. I'll just read out for you. Objectives, the long term aims or nominal anchors. मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म एम कि भाई आप क्या चाहते हैं अपनी इकोनॉमी से, along with that the short term target requirements, that what should be done in order to manage the short term requirements. For India, this is the explicit inflation target that anchor market expectations कि भैया you have to manage the inflation in order to fulfill the market expectations. Governance means it focuses on who drives the policy, how transparent the policy is, and how they are held accountable to the public. तो आज की डेट में इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे कौन फ्रेम करता है? So it is being framed by मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. क्यों करती है, कैसे करती है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज डे टू डे प्लम्बिंग, हाउ द सेंट्रल बैंक मैनेजेस liquidity and key tools to keep the short-term money market rates on target. That is basically the operational procedures which are involved in the monetary policy framework. अब मैं आगे बढ़ने से पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में कैसे चेंज हुई है पूरी की पूरी मार्केट में, लेकिन उससे पहले अगर मैं बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसे फ्रेम किया जाता है आरबीआई द्वारा, so that RBI can control the money supply in the market. And how RBI control the money supply in the market, this is very important to understand. First of all, I'll again draw the same flow chart as I always say. Money supply जब increase होगी तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा बताओ जरा. सर डिमांड इंक्रीज होगी,
And if the demand is increasing, it will result in increase in supply? No, sir. In supply will not increase instantly. In short term, it will not increase. Rather, over the period of time, it may increase, and this results in price rise. Price rise से क्या होगा? So this results in inflation. This results in inflation. Now please pay attention. This is very important. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, तो डिमांड के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा? सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन विल इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जीडीपी of the country increases. Due to production, employment opportunities increases, and due to this, income of the country increases. Due to this, income of the country increases. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. जैसा कि मैंने कहा कि इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सो द मूवमेंट इनकम इंक्रीजेस, द मूवमेंट इनकम इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल है. पहली चीज सर, इनकम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. और अगर कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट होगा सर? उससे रिजल्ट ये है कि कंपनी की जो सेविंग्स है, कंपनी की जो सेविंग्स है दैट विल इंक्रीज. कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल इंक्रीज. रादर देन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग साइमल्टेनियसली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेविंग्स. अगर कंपनी की सेविंग्स या इंडिविजुअल की सेविंग्स, चाहे वो मेरी है, चाहे वो कंपनी की है, चाहे वो फर्म की है, अगर सेविंग्स इंक्रीज होंगी तो सर हमारा मेजॉरिटी जो सेविंग्स है वो कहाँ होती है सर? दैट आर इन बैंक्स. सो दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स. तो इससे होगा क्या? तो बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होगा, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होगा. अब बैंक डिपॉजिट अगर इंक्रीज होगा, अगर बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? सब बैंक डिपॉजिट के इंक्रीज होने से बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी. लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डिपॉजिट ज्यादा तो आपके लोन देने की कैपेसिटी ज्यादा. अब अगर मार्केट में लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की इंक्रीज हुई, इफ बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, this will result in lending rates, this will result in lending rates to decrease. Now the question is why? उसका रीजन बड़ा सिंपल है सर. लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा तो लोन की सप्लाई ज्यादा, और जब भी कभी लोन की सप्लाई ज्यादा होगी, इफ द सप्लाई इज ग्रेटर देन लोन डिमांड, if I'm assuming if the loan supply is greater than loan demand, so in order to fulfill the supply, in order to increase the loan demand, undoubtedly what will bank do? So bank will decrease the lending rates. Undoubtedly bank will decrease the lending rates. क्या ये पॉइंट सही है? क्या ये पॉइंट सही है? If this point is clear to everybody, give me yes sir. If this point is clear to everybody, give me yes sir. अगर ये पॉइंट सही है तो अब मैं कहता हूं सर आरबीआई क्या करे? इफ आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट, आरबीआई शुड हिट at the very first point, that is for what? Money supply is increasing, so RBI should, if RBI want to control the inflation, that is RBI is trying to decrease the inflation, then what should RBI do? Sir, in that particular case, RBI should come up with a format that RBI should firstly decrease the money supply in the market. Second is RBI should try to decrease the bank deposits. RBI should try to decrease the lending capacity of the bank. RBI should try to increase the lending rates of the bank. RBI should try to increase the lending rates of the bank. So if RBI is trying to solve all these problems, undoubtedly money supply in the market will decrease, availability of credit in the market will decrease, automatically inflation rates will start falling down. So therefore, if RBI wants to control the inflation, what should be done by RBI? The first is RBI should try to
RBI should try to decrease the money supply in the market. RBI should try to decrease the bank deposits. RBI should try to decrease banks' lending capacity. RBI should try to increase banks' lending rate. RBI should try to increase bank lending rates. And everything which is mentioned, this is done. This is done with the help of monetary policy. This is done with the help of monetary policy. This is done with the help of monetary policy. Is this point clear? Is this point clear? So basically monetary policy hai kya? So monetary policy is a policy through which RBI control the inflation rates of the economy. RBI tries to maintain the price stability. Along with price stability, RBI tries to maintain or achieve the economic growth in the country, and that is basically done with the help of different methods, which we call it as, or different policies which are operated and managed under monetary policy. Is this point clear? Is this point clear, everybody? अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया, and you still have a doubt in the same, then I'll give you one more flow chart. I'll give you one more flow chart, and that flow chart is, please pay attention. वो flow chart देखना क्या कहता है. सर वो flow chart ये कहता है, please keep looking on the screen. If money supply in the market increases, it results in increase in demand, due to which inflation increases. Due to inflation, income increases, and due to income, deposits increases. Due to deposits, lending capacity increases. Due to lending capacity increase, lending rates will fall down. If inflation rates are high, and RBI wants to decrease or control them, तो RBI क्या करेगा? Sir, obviously RBI will go from first scenario to second scenario. So what will be the second scenario? The second scenario is RBI should try to decrease the money supply in the market, which will result in decrease in demand. Due to decrease in demand, inflation rates will fall down. Now the question is, how this will happen? So this will happen if the income decreases. That will result in decrease in deposits, that or RBI decrease the lending capacity of the bank, और RBI decrease the or increase the lending rates of the bank. अब हो सकता है कि ये फ्लो ऐसा ना बने, हो सकता है कि ये फ्लो ऐसा ना बने, बट हमें चाहिए रिजल्ट. तो रिजल्ट के केस में RBI should try to decrease the lending capacity, RBI should try to increase the lending rates, RBI should try to decrease the deposits with the bank. RBI should try this, and this try of decreasing and increasing different formats is basically called as monetary policy. It is basically called as monetary policy, and maintaining the financial stability of the economy, monetary stability of the economy, as well as achieving the economic growth. This is the core function of RBI, which is mentioned in the preamble of RBI Act 1934, as we have discussed in our previous sessions. अब बात आती है कि सर हाउ दिस era has changed over the period of time, how monetary policy framework has been revised over the period of time. So if I talk about the first and the foremost important fact or the point, the foremost important point is that is 1971 to 1985. This is known as monetization of financial deficit and controls. So what happened during this period? Government has witnessed large fiscal deficit, and government relied on central bank to finance the sum of that deficit. So this process was basically known as monetization, which means RBI used to pump extra reserves into the banking system, and that leads to inflation.
इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सिचुएशन में बात करें 1971 टू 1975, प्लीज पे अटेंशन, आई विल क्विकली ऐड फ्यू स्लाइड्स। हाँ जी, तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर 1971 टू 1985 क्या था, सो वी कॉल इट एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing. What is the meaning of this deficit financing? These dates are not important. If I'll write it like this till 1985 तो भी एक ही बात है। Deficit financing का मतलब है deficit government deficit was compensated by RBI. So what RBI used to do, sir? RBI used to print extra currency. RBI used to print extra currency in order to ओवरकम गवर्नमेंट डेफिसिट। कि भैया आप कितने डेफिसिट हो, 100 करोड़, ये लो जी नए 100 करोड़ रुपए प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे दिए, आपका डेफिसिट खत्म हो गया। अब जैसे ही गवर्नमेंट के पास ये फंड्स पहुंचे, मनी सप्लाई पहुंची, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ सर? देयरफॉर मनी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीजेस। इफ द मनी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीजेस, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? So this results in increase in inflation rates of the country. This results in increase in inflation rates of the country. So the to counteract the inflation, RBI often used direct controls such as RBI take n number of other steps to control the inflation, क्योंकि वो inflation actually में that inflation was actually induced by RBI only because of the excess printing of currency, just to fulfill the government deficit, तो environment कुछ ऐसा था कि सर पहले मार्केट में गवर्नमेंट के पास पैसा कम, आरबीआई ने पैसा ज्यादा प्रिंट किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई। अब उस इन्फ्लेशन को खुद आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, और उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इकोनॉमी में हार्श स्टेप्स ले रहा है। वो हार्श स्टेप्स क्या है वो हम बात करेंगे, लेकिन वो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हार्श स्टेप्स ले रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। एक तरफ आपने पहले करेंसी ज्यादा प्रिंट कर दी, अब उस करेंसी की वजह से डिमांड बढ़ी, अब डिमांड को देखते हुए आपके पास सप्लाई है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और उसे कंट्रोल करने के लिए यू आर टेकिंग द हार्श स्टेप्स व्हिच आर नॉट फिजिबल, व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, व्हिच आर नॉट जस्टिफाइड। समझ आई ये बात? इफ इट इज क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट क्या आया सर? अगला पॉइंट आया सर बियॉन्ड आफ्टर 1985 till 1998 आई वुड से। अब आरबीआई ने क्या देखा सर? आरबीआई इज नाउ फोकसिंग ऑन M3। आई होप यू माइट हैव हर्ड अबाउट broad money. You might have heard about the categorization for money in the country, where we have M0, M1, M2, M3 and M4. M3 basically includes what? Sir, it includes cash in circulation plus demand and time deposits with the bank। मतलब क्या हुआ कि सर जो पब्लिक के पास कैश है, along with that जो पब्लिक का पैसा डिपॉजिट में है, चाहे तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर एफडी आरडी में बैंक के पास, दैट इज M3। सो आरबीआई always looked upon the same. So after the economic pressure of the early era, high level committee was chaired by S. Chakrabarti. He recommended that we should shift to monetary targeting, and in this approach the central bank set targets for broad money, that is M3 growth, as an intermediary objective and used to control over the reserve money as an instrument। तो यहाँ पे reserve money को use किया जाता था as an instrument, and always RBI try to control M3। RBI को लगता था कि अगर M3 control कर लिया तो inflation control हो जाएगी। So idea is, if M3 grows at consistent rate, it will lead to real GDP growth and it will lead to tolerable inflation rates। तो RBI का टारगेट यही था कि we should monitor that M3 is growing at, or M3 is increasing at a consistent rate, at a slow rate। ठीक है, फिर उसके बाद बातें चेंज हुई सर, उसके बाद चीजें चेंज हुई। Then since 1998-99 अब क्या आया सर? अब आए काफी सारी चीजें, उसमें आया कि सर नाउ आरबीआई will go for multiple indicators में
RBI said that I will not be only focusing on M3, rather I will be focusing on multiple indicators. और वो multiple indicators कौन से हैं? Sir, M3 was, or M3 still is the one of the important indicator. Along with that, we talk about credit of the bank, credit facility of the bank. Along with credit facility of the bank, now RBI talks, check out output and trade, that what is the level of output and trade in the economy. Along with that, RBI check the capital flow in the economy. Along with this, RBI check the fiscal position of the country, that whether our fiscal deficit is very high, adequate, whether the government will be able to manage it or not. Now, interest rates of the market, inflation rate of the country, along with that, exchange rate of currency, and obviously फॉरवर्ड लुकिंग टारगेट्स. फॉरवर्ड लुकिंग टारगेट्स का मतलब कि भैया आरबीआई ये देखता है कि मार्केट में फ्यूचर में कितनी इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में क्या जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, all these indicators, RBI will be uh, controlling the inflation rate. So rather than relying on only one indicator, this approach gave a rich picture and appeared to work reasonably well from 2000, from 1998-99 to 2008-2009, when the growth averaged around 7% and inflation was 5%. However, these multiple indicators, they had created a number of problems in the near future. It didn't provide single clear nominal anchor. With episodes of high inflation, weakening growth, people began to call for a framework with a clear inflation target. तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर इतने सारे इंडिकेटर्स थे, दुनिया बड़ी कंफ्यूज कि यार इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, कैपिटल फ्लो कम है, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है इकोनॉमी में. तो भैया वहां डिमांड आई कि इस फ्रेमवर्क से बात नहीं बनेगी, यू शुड कम अप विद अ डायरेक्ट फ्रेमवर्क जहां पे you should be targeting the inflation, and it should be very transparent. Everyone should know that what you are actually doing. Then finally, since 2016, dr urjit patel committee dr urjit patel committee was set up. और ये जो डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी सेटअप हुई, दिस कमेटी केम अप with a clear announcement that RBI will be targeting the headline inflation. Headline inflation means the major inflation of the economy, which was earlier WPI and now it has been replaced by CPI. So today we have CPI combined, which is called as headline inflation, and it was clearly mentioned, rather than targeting a single inflation rate, which is अर्लियर डन. यहाँ पे क्या था, मान लो इन्फ्लेशन टारगेट 4% है तो ये 4% ही रखा गया था, विच इज वेरी टफ टू अचीव, विच इज वेरी, आई वुड से, कंस्ट्रेन्ड ऑन द बैंक टू अचीव. तो उसी को ओवरकम करने के लिए नाउ आरबीआई केम अप विद फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. Flexible inflation targeting framework, which says that for every 5 years, government will fix the flexible inflation target framework, which is need to be fulfilled or which is need to be achieved by RBI, and this target will be set by RBI. This target will be set by RBI and government in consent, but the final decision will be taken by the government, and this target is revised every 5 years. So first time the target was 4% plus minus 2%. Again revision was done, it was maintained the same. Again revision was done, it was maintained the same. So right now, if India's inflation, combined CPI combined inflation, is in a range 4% plus minus 2%, we consider this inflation as controlled inflation rate. We consider this inflation as controlled inflation rate. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट? If it is clear, give me yes sir. If it is clear, just give me yes sir.
चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? सो द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट who is responsible for framing the monetary policy. Since 2016, since this Urjit Patel committee, it has also recommended that now monetary policy will be framed by Monetary Policy Committee, which will be a statutory body which will be set up under Section 45ZB of RBI Act 1934. पहले क्या था? So पहले there was no clear powers given for the framing of monetary policy. Rather, the final decision for monetary policy was taken by RBI governor, जो कि सही नहीं था, and we had technical advisory committee which act as an advisor to the central board of directors, and these central board of directors used to discuss the monetary policy, what is need to be done, and then finally governor was responsible to take the decision. But this is not true, क्योंकि RBI चाहता है कि everybody should know that why I am taking these decisions. Therefore, RBI or Dr. Urjit Patel committee recommended setting up of monetary policy committee, which comprises of 6 members, and these 6 members, they are classified into 2 categories. 3 are RBI officials, and rest 3 are eminent economists. Eminent economists का मतलब इंडिया के मशहूर अर्थशास्त्र. 3 RBI officials include governor. Why governor? So governor is the ex officio chairman, means whosoever is the governor of RBI will automatically become the chairperson of Monetary Policy Committee. Then deputy governor is appointed, and this appointment of deputy governor is done on the recommended by governor. So governor will recommend that who is going to be out of the 4 deputy governors who is going to be appointed on the Monetary Policy Committee, and same goes for executive director as well. ठीक है, तो ये 2 members हैं which are appointed, and generally the chairperson of Monetary Policy Department, the deputy governor of Monetary Policy Department, is the part of Monetary Policy Committee. अब आता है सर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट. एमिनेंट इकोनॉमिस्ट के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी सेटअप की जाती है. कैबिनेट सेक्रेटरी इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज, कैबिनेट सेक्रेटरी is the senior most IS officer of the country, and we call him as cabinet secretary. So under his chairmanship, a cabinet secretary committee is set up, and that committee shortlist the names of eminent economists who are going to be appointed at Monetary Policy Committee. This appointment is done for 4 years, and final approval of the appointment is given by Government of India. And these members, they are appointed for 4 years. Recent ones are appointed for 2024 to 2028. Remember one thing, I'm giving you homework. In the comment section, you have to give me the names of 6 members of Monetary Policy Committee. This is your homework, where you have to give me the names of 6 members of Monetary Policy Committee. A Monetary Policy Committee के ऊपर there are certain responsibilities which are ought to be fulfilled by Monetary Policy Committee. What are those responsibilities? The first responsibility is Monetary Policy Committee should meet at least 4 times. That means 4 meetings in one financial year are need to be done. Minimum 4 meetings are need to be done. At least 4 members should be present in the meeting. Otherwise that meeting will not be called as official meeting. Next is Monetary Policy Committee take the decision through simple majority. Simple majority means out of 6 members, if 4 members are in favor, then that decision will be taken. 4 members are in favor, then that decision will be taken. But if there is a tie, that is 3:3, then in that case,
one extra vote, one extra vote will be casted, one extra vote will be casted by RBI governor as chairperson of the committee. तो RBI का governor chairperson है committee का, तो he will be casting one extra vote only in case of tie, not always. Next is monetary policy committee will be responsible to publish the minutes of monetary policy meeting. Minutes of monetary policy meeting का मतलब कि भैया क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में कौन कौन से मेंबर्स दे वर इन फेवर ऑफ करंट मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ मेनी ऑफ वर अगेंस्ट the current monetary policy, so that public can know the thought process behind framing the monetary policy. So public transparency is very important. Not only this, monetary policy committee will be responsible to come up with monetary policy report where they will be justifying पास्ट इन्फ्लेशन रेट्स कि भैया पहले इन्फ्लेशन रेट्स ऐसे क्यों थे, जस्टिफाई करो, प्लस फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेशंस विल आल्सो बी शेयर्ड. भैया आप ये भी बताओ कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट्स क्या होंगे, वो एक्सपेक्टेशंस भी यू हैव टू शेयर, एंड एवरीथिंग इज डन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. एंड हियर यू गो, 3 members, 3 external members appointed by the government for the tenure of 14 years. Minutes within 14 days, generally fortnightly, हर 14 दिन में, या आफ्टर कंप्लीटिंग अ मॉनेटरी पॉलिसी मीट fortnightly they are responsible. ये जो मैंने मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग लिखे, दैट शुड बी डन fortnight. मतलब जैसे आज अगर मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर you have to come up with the minutes of monetary policy meeting. You have to come up with the minutes of monetary policy meeting. Is it clear? आपको लग रहा है कि अभी भी समझ नहीं आ रहा सतीश? आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इससे भी बेसिक से बताओ, तो फिर मुझे लगता है बुक भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगी. फिर मुझे लगता है कि बुक भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे बेसिक मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे ऐसा लगता. Is it done? Is it done, everybody? If it is done, give me yes sir. If it is done, give me yes sir. पूछो ना सतीश, पूछो जो नहीं समझ आ रहा, पूछो. मैं एक एक टर्म आपको बताऊंगा यार. मैं तो अभी वो टर्म्स यूज ही नहीं कर रहा जो अक्सर हर जगह यूज किए जाते हैं. मैं यहाँ पे अपनी नॉलेज तो दिखा ही नहीं रहा. मैं यहाँ पे लिक्विडिटी रिजर्व्स, ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी, सर्कुलेशन, पोस्ट सर्कुलेशन, करेंसी प्रिंट, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं इन फाइनेंस जो मैं यूज ही नहीं करता इंटेंशनली, विच आई डोंट यूज इंटेंशनली, ताकि मैं आपको बेसिक से समझा पाऊं. फिर भी अगर आपको लग रहा है तो पूछो, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Garima, I would appreciate if you will share the homework once the class is over in the comment section. I would appreciate that. ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं. In the tomorrow's session, I'll start with monetary policy action versus monetary policy stance. Then I'll start with quantitative monetary policy. Quantitative monetary policy में we'll discuss the tools. First one, we'll talk about open market operation. Then we'll talk about reserves, that is CRR, SLR. Then we'll talk about repos, that is repo rate, reverse repo rate, and many more. After this, we'll move on to the qualitative monetary policy, and lastly, we'll move on to the priority sector lending. तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, तो अभी हमारे पास 5 सेशंस और कंडक्ट होंगे in which I will be covering your entire monetary policy. ठीक है? Statutory word basically means legal. It basically means legal. When any body which is set up, and at the time of setting up, it is mentioned under an act.
It is mentioned under an act which gives it a legal status that yes, this particular organization is legal in nature because it is written under a law. So we call it as a statutory body. For example, RBI set up under RBI Act, we call it as what, sir? We basically call it as statutory body. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सतीश, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा है. Government is spending 120 rupees, earning 100. So that 20 rupees which is less with the government, that is known as deficit. Fiscal deficit means financial year deficit, कि पूरे financial year में government का total deficit कितना expected है, we call it as fiscal deficit. How does increase in export price affect inflation? अच्छा, आदित्य का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं. आदित्य ये कह रहा है कि सर कैसे आपका जो हाउ डज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस अफेक्ट इन्फ्लेशन. पता नहीं आप कैसा कहना चाह रहे हो. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, उससे क्या होगा सर? इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस. तो जैसे ही एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अनडाउटेडली देयर डिमांड डिक्रीजेस. ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, inflow of foreign currency decreases. This results in current account deficit increases. अब जिसको नहीं पता करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब, इसका मतलब ये है कि सर इंपोर्ट इंडिया में ऑलरेडी ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये जो डिफरेंस है दैट ऑलरेडी सेज दैट इंडिया इज डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ करेंसी इनफ्लो. तो अगर ये एक्सपोर्ट कम हो गई तो ये डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा. इफ दिस डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, it will result in decrease in supply of foreign currency decreases in India. अब इंडिया में अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज हो रही है, therefore foreign currency price increases. फॉरेन करेंसी प्राइस इंक्रीजेस का मतलब क्या हुआ सर? INR is depreciating. INR is depreciating. This is how you can relate. Is it clear? Aditya? Yes, Ayushi, you have a class tomorrow as well, even if it's Saturday, but I was not available for 5 days or 4 days. I don't know, 3-4 days I was not able to take the class. So Saturday, tomorrow also we have a class at 8 p.m. We have a class tomorrow, even on Saturday at 8 p.m. So be present tomorrow. I'll schedule the event right away. तो आपके पास अभी पता चल जाएगा कि कल की क्लास आ जाएगी, तो you should attend it. Done? Is it fine? Aditya, is it clear? Shall I conclude? Okay, thank you so much. I hope you have enjoyed the session. If you have enjoyed the session, do share your valuable feedback in the comment section. And as I promised, I will be completing the entire monetary policy chapter on YouTube itself. So do watch it. Do join this session on regular basis so that you can understand this chapter. You can understand the concept in much detail. Thank you so much. Good luck.